Then we were given this letter of termination, so we started even scaling down on basic healthcare services on the streets. Voluntary counselling and testing was stopped. Access to social services was stopped. Access to advanced medical care was stopped. Access to, obviously, drug treatment was stopped. So around the 1st of May, the only service that we had was syringe exchange. ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के सरगोदा का नक्शा है। इसमें ये जिन जिन जगहों पे आपको ये टैग्स नज़र आ रहे हैं, ये हमारे स्पॉट्स के ऊपर लगे हुए हैं टैग्स। अब फील्ड में हमारी सर्विसेज नहीं जा रही। ये एक ऐसा काम है कि इंसानियत की हम खिदमत कर रहे हैं और हमारी दुनिया भी है, मतलब हमें तनख्वाह भी मिल रही है और ये खिदमत खल्क है जो कि मैं समझता हूँ कि मैं आखिरत में हम इन लोगों की दुआएं हमारे बहुत काम आएंगी। Approximately 220 staff members have been asked to leave as of 31st May. Highly skilled, highly trained workforce that has been trained over the last 10 years. Today, which is the 29th, is the last day of service delivery in Sargodha, Lahore, Faisalabad and Sialkot. These are cities where programs have been there at scale consistently for the last 5 years. नई जिंदगी जी ख़त्म हो गई जी तो असी खुआर होंगे ना घर दे ना बाहर दे ना घर वाले वड़न देंगे ना जूती ना कपड़ा ना खाण नूं मिलेगा जी राशन देंगे ने पानी सब कुछ हर चीज़ 15 दिन बंदा इलाज करा लेंदा घर सार रह के भी इलाज नहीं जी होंदा। नई जिंदगी ये जेड़ी कि साडा इलाज कर रही है जख्म बढ़ जाने है ते बाजू ते कटे ही जाने जारी गल हैगी ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बढ़ना ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਰਿੰਜ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰਿੰਜ ਨਾਲ ਬਈ ਇੱਕ ਕੋਲੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅਸਾਂ ਪਾਣੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜੋ ਵਾਪਸ ਆਏ नवी जिंदगी की वजह तो ऐसी हमारी मौत है जैसे एक जानवर फड़क फड़क कर मरता है, वो तो फिर भी फड़क के वहाँ हो सकता है, हम ऐसे भी नहीं फड़क सकते, एक ही जगह पर पड़े रहे फड़कते रहते हैं। By 2015, we have signed up with the rest of the 192 countries to the Millennium Development Goal number 6, which is specifically related to HIV and AIDS. But the actions we are taking are totally opposite to what we have committed on paper. Injecting drug users में हम हमेशा से ये कह रहे हैं कि when HIV एंटर होता है तो वो स्प्रेड वेरी रैपिडली करता है। 50% ऑफ देम आर मैरिड एंड दे आर ट्रांसमिटिंग टू देयर वाइफ्स, और वो पुअर ख़वातीन जो हैं उनको पता भी नहीं है कि उसका मियाँ HIV पॉजिटिव है, एंड देन लेटर ऑन शी बिकम प्रेग्नेंट तो वो बच्चा भी आता है। सो इट्स अ कंटिन्यूस चेंज, और ये ब्रिजिंग पॉपुलेशन है टू गोइंग इनटू द जनरल पॉपुलेशन। मैं जानती थी कि मेरे शोहर HIV पॉजिटिव था, लेकिन मैंने घर वालों को किसी को नहीं बताया था कि कोई इनसे नफ़रत ना करे और कोई इनसे बदसलूकी ना करे। इन्फेक्शन था, एड्स हो गया था उनको, इसलिए फिर वो वफात पा गए। मेरे शोहर के फौत होने के बाद घर में यही बेरोज़गारी है। There is quite a fair chance that the World Bank might turn around and say, look, you have terminated a contract without any real reason to terminate it. Why should the bank be, putting money in for programs that can just be shot down or bulldozed just with a signature? मंडी बहाउद्दीन में 52% लोग जो हैं वो HIV पॉजिटिव हैं, उन लोगों में से जो कि टीके के ज़रिए नशा करते हैं। इत्थे मार्फिया नशा चलदा गोली दा। हाँ जी, बाकी ये कोई ज़िंदगी साड़ी बच गई है, जिन्होंने चीज़ों की नहीं सी मालूमात उन्होंने चीज़ों की मालूमात हो गई है। यानी कि HIV के बारे भी सानू कोई नहीं सी इलम है इस चीज़ का। वो सानू यही फायदा सी कि असी हर वार नवी सिरिंज इस्तेमाल करते सां, उहदे च असी बीमारियां तो बचते सां, सानू ये सहूलत सी। और जे उहदियां नहीं मिल रही उस तो बाद फिर साड़ी वही रूटीन बनती जा रही है, एक दूजे की झूठी सिरिंज इस्तेमाल कर लैंदे आं। इन्नी गुंजाइश नहीं कोल हुंदी कि असी नशा खरीदिए कि सिरिंजां खरीदिए। ये मेरे पास सिरिंज है, इसको 3 दिन हो गए, 3 दिन लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी सुई है वो अभी जिस्म में नहीं उतरती, फिर दांत के साथ इसका नक्का सही करते हैं। 5-5, 6-6 मरतबा इसको लगाना है, फिर जाके इसने काम मतलब लगे नहीं तो 10-15 मरतबा सुई इसमें
तो इसीलिए ये सोच पे आप बन जाती है। A person who is using drugs is a human being at least. He should be treated as a human being. He should be given an access to primary health care services and HIV preventive services. That is his basic right, and that is the duty of the government to protect them. Nobody in the government has the capacity, intellectual capacity, to come and say what you are doing is wrong. And I think that is where we need to look at what the Chief Minister of the province is doing. We have gone into arbitration, yeah? But what will happen to those who have nothing to do with the contract, who have nothing to do with the department, who are just beneficiaries of the program? You know, what will happen to the wives and the children of those that were benefiting from the program? Infections which could have been averted, deaths which could have been completely averted, a burden of disease on the healthcare system that is already overburdened, a complicated disease, a costly disease. Are we geared as a nation to deliberately take on a disease that can be fantastically avoided?